All right. Good evening, everyone. Good Welcome to evening. UI UX Design Fundamentals Lecture Second. I hope you guys liked the first lecture, and of course, on top of it, you guys practiced Figma, the links that were sent on the groups. Who have not, don't worry, I'll resend it to you guys again so that you can start with the base. And today, also, we are going to cover that a little bit. So let's begin our lecture. So the agenda for today is design thinking process, the first. The second would be about user research, general research, overall research. That is the first step in our UI UX. And lastly, we'll start with the basics of Figma in the live lecture itself. Okay. So let me quickly share my screen and can get started with the lecture. Super. Is my screen visible? Yes, it is. Yeah, Harsh. All right, perfect. Cool. So let's start. As to what is design thinking? Okay. So everything that we do has a process. So this process of design thinking is laid out by D School, which is a Stanford university, right? So they have laid out this entire process in a theoretical manner also, and it is a foolproof uh, thing, if I have to put it that way. So that's why it is widely used by each and everyone. Okay. So let's see as to in theoretical way what is design thinking. So it is a problem solving approach that prioritizes the customer. So if you see closely that previously it was all about business. It was all about how and what the business people needs. If you see ads also, nowadays the ads have changed a lot. So previously it was more about, we do this, we do that. But when Nike and Apple started their advertisement, it was not about their product, but it was more about why their products, okay, why their products existed. So if you see, they focused on the customer, they focused on the consumer when they started advertisement. So the entire philosophy has been driven down from that approach, that keep the user as the priority, correct, use the processes, use the methods, and then design a solution for the users, keeping of course the business goals in mind, right? So that is the definition of design thinking. We have to put, if I have to put it that way, right? So the very first step of design thinking is, so there are 5 stages of design thinking. The first is empathize. So what is empathize? Where you research what your users need and not only about the business. So as I mentioned in my last lecture also, correct, that we need the uh, yes. So in my last lecture also I mentioned that it is not only about the business. So we are a bridge between user and the business, correct? So for that reason, empathize stage is more important because you have to understand the user, you have to understand his behavior, you have to understand what set of target audience are we dealing with, correct? So all that needs to be taken care in the empathize stage. So you understand what actually the user requires, okay? So that is the first stage, that is empathize. Coming to the second stage, that is define stage. So when you know as to what users need, you start defining the stages, you start defining the phases, you come out with problem statements that the users have, and you start articulating, the problem and set goals to it, that if this is the problem, these are the goals that will help the users. Okay, so you actually define what needs to be done for these many problem statements. The third one is ideation phase. This is where everything starts to see or starts to visualize. Okay, so you finalize here as to this is the strategy that we are going ahead with. These are the multiple ideas that we are planning to go ahead with. These are the set of rules, or these are the set of processes that we will follow to solve these problems. Okay, so ideation phase is more about brainstorming, more about
and giving out the solutions. Okay. Then comes the next phase, which is the prototyping. So in the prototyping, you actually start designing. It can be designing of the wireframe, it can be designing of the UI. Everything that you design, correct, is in the prototype phase. So in Figma, of course, we know there is a thing called prototype, right? So same way in the design thinking process, when we talk about prototyping, we actually start creating solutions. We actually start designing solutions. That is screens in our case. Okay. Then comes the testing phase. Now, what is testing? So everything that we do, of course, we have taken users' feedback, we have done the user research, we have also taken input from the business, we have designed the prototype. Now is the time when you actually give this to the end customers to test. Okay, and then once they test, you get the feedback from them. That at times it may happen that you may feel that this will work for the user, but it does not. Okay, and at times you may feel that this will definitely work for the users and it will work. Okay, so in that way, what you have to do is you have to test out your application. Okay, that there are multiple ways of doing it. So some of them do at the prototype stage itself. You give them the link of the Figma. At certain point, what happens is they develop like a very small static application or website, and they give out to some set of users to get the user testing done. Okay, so that way you get do the test and you get the results, and once you get the results, right, that is when you start iterating over it. So officially there are only 5 steps to design thinking, but I usually add the sixth one, that is iterate. Okay, now what is iterate? Once you get the feedback from the user after the testing phase, you again rework on it. Okay, you again rework on it. The reason is, even though we are experts, we all design platforms, but nothing is foolproof. Just like security, right? In the security world, it is always said that security is never foolproof. So the same way, even UI UX is not foolproof, because how you design, how you think about the user and you design, it is not necessary that the user will exactly behave the same way. It may happen that they behave some different way, correct? So that's why, to keep the UI UX process continuously, the sixth point, which is the iterate, it is more important, because once the product or platform is done, you have tested it. Now you may go back to some of the features and make some changes to it. Correct? So the official design thinking process has these 5 steps. So if you look at that closely, first is the empathize, second is the define, third is the ideate, fourth is the prototype, and fifth is the test. Okay. So what we will learn throughout the course is nothing but this design thinking process. Okay, so we will have everything up till the UI, where you can give those Figma links to the end users to test and get the feedback. Okay, but this is like a very high level journey of a product, of a platform life cycle. Okay, but it can be for a website also. For a website, you may not need like a testing phase or anything of that sort, correct? But for a platform, for a mobile app, you may definitely need it. Okay, so that's the reason I have added that sixth point, which is the iterate phase, because it is an ongoing process ultimately. So if you see one website which was designed 3 years back, now the things have changed, so it needs a little more modification, correct? So that is nothing but an iterative phase. Okay, so that's why there is also this note which I usually add, that these stages are also not sequential. So it is not that you will do this only then you can do that. No. Why? Because some part can be done in bits and pieces. Some people are working on the research, some people are working on the ideation part, and in parallel, right, if you have some feature that is already developed, you can start testing it, get the feedbacks. So things can be done in parallel, and as I mentioned, it is an iterative mode. It is not like a one time job.
So that's why UI UX will always be there. UI UX will always have its own charm, right? And especially the UX UI designers, right? So this was about the thinking, design thinking process. Now let's move to user experience part. And in that also we saw that there are multiple points to it, like user research, general research, user personas, journeys, information architecture, and wireframes. Okay. Now what we will start first is about only about the research. So in research also there are different parts to it. Why? Because we have different types of projects. Okay. So if you look at it closely, what are the different types of projects that you can have? So one is an existing customer, not your customer, but an existing project means where you have an existing website, where you have an existing web app, where you have an existing mobile app. Okay. So instead of repeating all these three again and again, I'll call it as platform. Okay. It can be web, it can be mobile app, or it can be web app. Okay. So there are three sets of projects that you can usually work on. One is the existing one where client has some platform ready. Okay. One is the business is old, but the platform is not there in place. Okay. So for example, if there is a business which is working say like since 20 years, but they now want a website or a mobile app. So in that case, the project is new for you or for them also. And the third one is a complete new idea where the idea itself does not exist. So how do you research these three set of projects, right? So there are different approaches to it when we talk about research. So let's see what comes in user research. We'll go step by step. So imagine we are talking about the existing project right now. First, that you have a project on of a website, say. So the very first thing that you will ask the client is, I need the Google Analytics data if they have embedded it, of course. So if they have embedded the Google Analytics, you need to get that data from there. Why? From Google Analytics, you will understand as to what is the current user base, what is the user's demographics, what is the target audience, or where the users are landing specifically. Are they landing on the home page? Are they landing on contact us or specifically on a product page? Okay, so you get those data from Google Analytics. In fact, you will also get to understand what percentage of users are landing from website, what percentage of users are landing from other devices. You will also come to know whether the audience is organic, whether it is from ad, or whether it is from some social media platform or through some blogs. Okay. So it is very important for us to ask the client, if you have the Google Analytics with you, please share that data with us. At least try different iterations for that. How? Try for last 30 days. First data for last 30 days. Then look out for 3 months and then look out for 6 months. So you'll get a consolidated data of the website as to how the website is performing. You will also come to know the time spent by the users on the website, whether they are spending good amount of time or not. If yes, then why they are not converting. If they are spending time in clicking the links, in finding the navigation, then that's a bad UX. But if they are scrolling and they are reading the content, then something is good about it. So what is good about it, we need to check. Right? Coming to the second part, that is the heat map data. Just like Google Analytics, it gives you a stat of the users, where they are landing, how the page is performing, the time, and etc. But on the heat map, it's again an application. You get some more insights. How? So you will come to know with the heat maps data that how many users have clicked where. Okay. Where are they scrolling? On which part they are stopping? On which part they are not interested? Correct? All of that data can be extracted from heat maps. So I'll also pull up an example of how heat map looks like.
Okay. Right. Perfect. So let me just share my screen and we again. Okay. So now this is a heat map of a website. All right. So you see these yellow, green, red dots. So these are nothing but the amount of clicks the website has received. So if you see the maximum clicks are here, correct? The least clicks are here, you know. So on the navigation, no one is clicking on search, but they are clicking on this particular link, right? So this is how you understand how the website is responding right now, correct? So let me share one more example of a mobile app. So now this is an example of mobile app. So you will see that a lot of people are clicking on back, right? People are clicking here. So this is nothing but the scroll. If you see this area, this is where the thumb area is to scroll, right? So you understand clearly what sort of data people are focusing on, where are they clicking more, where are they scrolling more, where are they spending some more time, right? So this is a very important and crucial data to understand again from a UX designer's perspective as to how I can make use of these data and of course use it to enhance the overall experience of the user, correct? So the first is the Google Analytics data, second is the heat map data. Once you have that in place, correct, then comes our third part, which is the competitive analysis. Now, competitive analysis can be done only if the project is an existing project or it is a new project. Of course, you cannot do competitive analysis for a new idea which does not exist overall, right? So when you do competitive analysis, of course, there will be a specific and special lecture for this, but right now I'm just giving an overview of this particular piece on the research. So on competitive analysis, we will figure out few pointers as to if I am looking at this particular website, how is the content for this? How are the images for this? Is the navigation working well for the user? Is the navigation not working well for the user? Is the content readable? So there are different factors that we will take care and then we will do the competitive research for each of the platform, right? For the new project, you can do some competitive research in similar domain. So say for example, if Uber was our client, so the idea was new, correct? But you can still see as to what people are doing in the travel industry. Is there any such platform for travel for hiring cabs? Then in that case, you can figure out some competition, some competitive analysis and do your research. Okay. So now these three are in control. Okay, we will get the data from, you know, the clients. We will get the data from Google. There is also one more part of it called as a general research. Okay. Just a second. Yeah, general research. So I'll come to the later to in a bit. So in general research, what we do is we Google out some data. We see what are the general stats. So again, taking example of Uber, say for example, right? So you will find out as to what is the number of people, what are the number of people who are actually hiring cab on daily basis. What is the time they take to hire a cab? Okay, so you can find out some stats based on that. You can find out some analytics as to are people really finding a pain in getting a cab? What are the peak time where you
cannot find a cab, so now this can be with regards to different demographics. Okay, and of course you will find some different user stats, the age group, the percentage of users in that particular age group, some specific user data if there is available, so these are some general stats that are readily available on Google, on of course now ChatGPT and Bard also. So you can find out those data. But on ChatGPT, of course, you will get some old set of data. But on Bard, you can still find out new set of data because that is latest and being pulled from the internet, right? So Bard is the AI tool just like ChatGPT from Google, right, by Google. So that will also be helpful tools for us to do the general research. Okay. So after all this, after the first step of understanding the Google Analytics, the heat maps, the competitive analysis, and doing the general research, the final outcome that we will have is nothing but some stats, some presentation, of course, that we will design. But the final outcome, the conclusion would be the personas, the user personas. Okay, that we will, of course, go deep dive later in the lectures. But coming back to our previous slide where we had, this user surveys and interview. So now again, this is very important part. So say for example, any of the projects, whether it is an existing, new or new idea, okay, you should conduct user interviews and user surveys. So if the project is an existing one, you can ask the client that we want to perform some survey with your existing client to understand the pain points. So you need to frame some questions. You need to set the questions in a way where you find out their pain points and not what they want. Because as Henry Ford mentioned, right, if you ask users what they want, they'll only say faster horses. Correct? But we don't want to do that. We want to find out the pain points what users have. Okay? So the questions should be such. So in the next lecture, of course, we'll see as to how to frame questions, what sort of questions, what are the user surveys that we can conduct, how well we can, be prepared for the questions. But this too can be done in different ways. So one is, as I mentioned, with the existing clients. The second can be done with your friend circle, with your friends, with your family, and of course, they are friends and family, right? That is for the new one because if the client is, having an old business, you can of course talk to their clients. You can conduct interviews, but at the same time, it would also be a good approach to contact your friends and family. Okay, of course, your entire team. So you get a third view as to what users are thinking apart from his existing clients. Okay, and then based on that, the final new idea that is purely your circle, your group of people that will answer these surveys and interviews, and you will again do the idea validation first as to how what do they think about this idea, but you will not directly pitch them the idea. In the surveys, in the interviews, what you will try and do is you will give some glimpses in the question itself. So say for example, taking the example of Uber again, you will ask them the questions: how often do you travel using a cab? Okay, or what is your average spend on cab in a month? How difficult is it for you to find a cab in say New Jersey? Are you familiar with a service that can give you, hiring of cabs on mobile app? So the answers should be multiple choice question and not answer in brief. Only then the service will be effective. Okay, and not more than 10 to 12 questions max. It should not be more than 10 to 12 because users get bored and they will, not fill out the entire form only. So better keep it short, but keep it multiple choice question. And so these type of questions will help you understand that yes, the idea is nice. Now these are the pain points that users are facing, and this is now my job to give the solutions to them using my expertise of UI and UX. Okay, so this is the part of research that we first have to take care. So in the next lecture, of course, we will uh, frame out survey questions and interview questions.
we will also do it on a live project. So I will give you guys a project. So for that particular project, you will have to frame questions and you have to get some feedback from the users also. Okay, not the existing users, of course, from your friends and family. And we will see as to how the survey, how the interview works. All right. So yeah. So we also talked about the general research. So in general research, we figured out that these are some of the stats that we can get from Google, from ChatGPT, from Bard. So after all these are done, we will then move ahead to the user personas. Okay, but everything that we do will be done on Figma. So right now, what we will start doing is, okay, we'll do a little practical session on Figma. We will do it live as to everyone has to start their Figma application and do some uh, what we say sketching out there. Okay, so what needs to be done? I'll guide you guys, but let's start with the Figma part. But till then, before we move ahead to Figma, any doubts, any questions, any queries, anyone? So please feel free to ask. Yeah, please, Vinny. Yeah, yeah. Yeah, sure. Vinny, please ask a question. सर आप हिंदी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं या श्योर, हिंदी में बोलिए ना, कोई इशू नहीं। इंग्लिश में बहुत फास्ट आप बोल रहे हैं तो सब ऊपर ऊपर से निकल जाता है अच्छा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ? हाँ हिंदी में एक्सप्लेन और करूँ? हाँ और कई कई बार तो जो आपके जो हाईलाइट टॉपिक होता है वो हम वो लिखने बैठे लिख रहे होते हैं तो कई बार हम आपकी भी बात नहीं सुन पा रहे और हम समझ भी नहीं पा रहे और हम वो जो लिखना चाहते हैं वो भी हमें पॉइंट जो नोट करना चाहते हैं वो भी रह जाता है हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, नॉट एन इशू। ठीक है। हाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस। बिफोर दैट ऋषि, आपका कोई डाउट? यू हैव सम डाउट? नहीं और कोई डाउट नहीं है ठीक है, ऋषि। Harsh, as we talked about Google Analytics and heat mapping, या I want to know that in our course, are we going to know more about how to get the data to analyze the Google Analytics data and for the heat mapping also? Like, I think most of them, and even I don't know about how to get the heat mapping data, or it's not in our scope that we need the heat map data. हमें जरूरत नहीं है heat map data की, मतलब निकालने की जरूरत नहीं है प्रोसेस, वो कोई और करके देगा हमें. What is it? हाँ, तो देर आर टू वेज ऑफ इट। सो बहुत बार जब क्लाइंट्स आपको डेटा देंगे ना गूगल एनालिटिक्स और हीट मैप का, तो दो हम्म अप्रोचेज होंगे। एक होगा, या तो वो आपको कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करके देंगे एक एक्सेल हम्म फाइल में, या फिर वो आपको एक लॉगिन दे देंगे। ठीक है। सो जब वो अगर आपको लॉगिन दे देते हैं, सो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको फोकस में रखना है, दैट इज कि उनके कितने यूजर्स आ रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। हम्म फिर उसके बाद ये देखना है आपको कि कौन से पेजेस पे ज्यादा ट्रैक्शन है। ठीक है। अगर है तो फिर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनका बाउंस रेट क्या है। ठीक है। हम्म और कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं। सो बहुत सारा जो एनालिटिक्स में डेटा है ना, वो क्लाइंट्स ऑर्गेनाइज करके पहले से रखते हैं। ठीक है। तो ओके. क्लाइंट खुद ही आपको बता देगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम कि हम्म देखो हमारा ये डेटा है, क्योंकि वो खुद भी एनालाइज करते रहता है। ठीक है। हम्म एंड जो हीट मैप है, सो हीट मैप में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रेड
पॉइंट्स कहाँ पर है, ठीक है, और येलो नहीं, और ग्रीन पॉइंट्स कहाँ पर है। हाँ सो वो तो देखने में कोई इशू नहीं है, वो देख के समझ में तो आ रहा है वो हीट मैपिंग, बट द पार्ट की हाउ टू जनरेट द हीट मैप, कि वो कैसे जनरेट होता है, कैन वी विल डू दैट और वी वोंट? no, you don't have to generate it. It is already pre-generated, ठीक है, हम्म, but you will always get a login for that. So the ओके moment you log in, right, you will see recordings, you will see ओके, sessions, okay, and the screenshot that are shared, you will get such screenshots also in the application itself of heat map. So you ओके don't have to extract it. It is all there. You just have to analyze it. ओके 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 ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, सो आई, और हाँ जी बोलिए। ठीक है, वो वो ठीक है, अच्छा। ठीक है, ओके। सो विनीत, मैं आपको एक बार ना क्विकली वापस गो थ्रू करवा देता हूँ दैट हाँ हमने क्या देखा अभी। आपको डिजाइन थिंकिंग समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक है, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, सो मैं वहां से शुरू करता हूँ। वो जो जनरल स्टेट्स वाला सॉरी, एनालिटिक्स, जनरल स्टेट्स में ठीक है, जनरल ठीक है, एनालिटिक्स का जो स्टेट था ठीक और है, यूजर डेटा। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सो जब हम रिसर्च करते हैं ना, ठीक है, हाँ सो वहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च होती है। एक होती है यूजर रिसर्च, एक होती है जनरल रिसर्च, ओके। सो हाँ जब हम यूजर रिसर्च कर रहे हैं ना, तो जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, तो ऐसे तीन टाइप ऑफ क्लाइंट आ सकते हैं। एक है जिनकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे भी प्लेटफॉर्म उनका ऑलरेडी है। एक होगा कि उनका कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, लेकिन उनका बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है। और हाँ तीसरा होगा कि आइडिया भी पूरा नया है। सो अगर आइडिया ही नया है, तो उसमें आप यूजर रिसर्च फिर अलग तरीके से करोगे। एग्जिस्टिंग अगर कोई उसका बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो आप उसकी रिसर्च अलग से करोगे। और अगर बिजनेस पुराना है लेकिन उसकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप नहीं है, तो उसकी रिसर्च आप अलग से करोगे। सो जिसके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, मान लो वेबसाइट है, तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि अगर आपने गूगल एनालिटिक्स एम्बेड किया है आपकी वेबसाइट पे, तो हमको उसका डेटा दो, ठीक है। सो वो आपके साथ डेटा शेयर करेगा, और जैसे मैंने बताया अभी कि वो डेटा को आप एनालाइज करके ये जान सकते हो कि कितने यूजर प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना बाउंस रेट है, मतलब कितने यूजर आ रहे हैं लेकिन तुरंत चले जा रहे हैं, ठीक है। सो वो सारा डेटा आप गूगल एनालिटिक्स से निकाल सकते हैं। दूसरा डेटा है हीट मैप का। जैसे मैंने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, कि वो हाँ हीट मैप में आपको पता चलेगा कि यूजर सबसे ज्यादा क्लिक कहाँ पर कर रहा है, सबसे ज्यादा स्क्रॉल कहाँ पर कर रहा है ना। और एक ये होगा थर्ड पार्ट, जो है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। सो जो गूगल एनालिटिक्स और हीट मैप है, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ ही आप कर सकते हैं, ओके। ठीक। लेकिन जो नया प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस सबसे पहले करोगे। कि सिमिलर डोमेन में मान लो कि किसी की वेबसाइट है फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ फूड, ठीक है। सो वैसे हाँ बहुत प्लेटफॉर्म है। सो आप देखोगे कि कंपटीशन क्या कर रहे हैं, वो लोग कैसे अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, है ना। सो वो आप हाँ एनालाइज करोगे डिफरेंट फैक्टर्स में, कि उनका कंटेंट कैसा है, कलर कैसा है, फॉन्ट साइज कैसा है, इमेजेस और इलस्ट्रेशंस कैसे हैं, है ना। और तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए आप यूजर इंटरव्यू और यूजर सर्वे भी कंडक्ट करोगे। सो जब आप सर्वे और इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करोगे जहाँ पे यूजर को ज्यादा दिक्कत ना हो आंसर देने में। इससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखोगे, एंड उसके साथ ही आप 10 से 12 क्वेश्चन तक ही फॉर्म करोगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आप ये पूरा जो यूजर रिसर्च है, आप इजीली कर पाओगे। और फिर आगे जब मैं जाता हूँ यूजर जनरल रिसर्च पे, तो जनरल रिसर्च में क्या होगा, एग्जिस्टिंग बहुत लोगों ने जो रिसर्च किया होगा, वो आपको गूगल पे मिलेगा। जैसे मान लो कि आप सर्च करते हो कि हाउ मेनी यूजर्स ऑर्डर ऑनलाइन ऑन डेली बेसिस, तो आपको उसका एक नंबर मिलेगा। व्हाट इज द एवरेज एज ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्डरिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको उसका ठीक। एक ये मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ। सो वो सब जनरल रिसर्च में आ जाता है, जो आपको गूगल पे, बार्ड पे, चैट जीपीटी पे, वो सब पे हाँ मिल हाँ सकता है इजीली, ठीक है। सो
ये सब का फाइनल आउटकम क्या होगा, ये सब जब हमारे पास डेटा हो जाएगा हम इसका प्रेजेंटेशन बनाएंगे, हम वो भी क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी रिसर्च थी, यूजर रिसर्च, ये हमारी जनरल रिसर्च है। एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे पर्सोनास पे, यूजर पर्सन। ठीक है। हम्म, ठीक। सो ये हमारा पूरा ओवरऑल रिसर्च का पार्ट है। जी जी। कुछ डाउट आपको इसमें? ना ना, ओके, जो ही कोई डाउट आपका भी नहीं। डाउट है। या या तो मुझे ये जानना था कि हम हीट मैप डेटा कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। सो हीट मैप जिसने अपने मोबाइल ऐप पे या वेबसाइट पे एम्बेड किया होगा ना, उसमें से ही रिट्राइव हो सकता है वो। ठीक है, वो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। ओके हाँ। सो अगर मान लो मेरी वेबसाइट है, मैंने उस पर हीट मैप इंटीग्रेट किया हुआ है, तो ही मुझे वो हीट मैप का डेटा मिलेगा। ओके या ठीक है। अंडरस्टूड। ओके, ठीक है। सो विल मूव अहेड, सॉरी, ओके, विल मूव अहेड टू आवर Figma. So the very first thing that we'll do is I'll just share my screen and we'll go step by step. ठीक है। So what we'll do is we'll start, everyone follow me while I'm designing, है ना? तो आप लोग को भी पता चलेगा हाउ फिग्मा वर्क। सो सबसे पहली बात तो बस रेज योर हैंड, कितने लोगों ने वो ट्यूटोरियल देखे हैं फिग्मा के? ओके, ओके, नाइस, ओके। जूही, दृष्टि, नहीं देखे आपने? No, sir. नहीं Actually, I पूरा नहीं was देख पाई। in ओके, events, so I couldn't say it. okay, no worries, no worries. So right now, while I am doing this, right, आप लोग मेरे साथ ही ये practice करिएगा. So at least we know what are the basic tools that we will need, okay, in Figma to start designing. क्योंकि the moment we start applying things on Figma, we will need to, learn. वरना क्या हो जाएगा, you will be stuck with Figma and फिर आगे कुछ बना ही नहीं पाओगे, है ना? So that should not be the case. क्योंकि right from research we need everything to be put on Figma. So जो भी हम रिसर्च करेंगे उसका भी प्रेजेंटेशन हम Figma पे ही बनाएंगे. Alright. So if you see, this is a blank document. This is how you rename it. So let me just add some name to it. Figma practice. Okay. I would request सब अपने end पे भी करते जाएं so that एक practice होती जाएगी. So the very first thing that you need in Figma is the artboard. ओके, सो यहाँ पर देर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ आर्टबोर्ड. अगर आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो तो फोन है, टैबलेट है, डेस्कटॉप इज फॉर वेबसाइट्स, फॉर वेब ऐप. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक आर्टबोर्ड ले लिया है. एंड इफ यू क्लिक ऑन द नेम, आपको यहाँ राइट साइड पे दिख जाएगा कि उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है. So right now we have taken 1280. So let me just remove this and let me take up this one 1440. ठीक है, सो हम मेजॉरिटी जो भी डिजाइन बनाएंगे फॉर वेबसाइट इट वुड बी इन दिस रेजोल्यूशन 1440. हाइट क्या है उसका अलग अलग क्राइटेरिया क्या है उस पर हम बाद में आएंगे, बट एटलीस्ट वी विल फर्स्ट नो कि ये वाला जो आर्टबोर्ड है हम ये सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, इफ यू सी इस आर्टबोर्ड में देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, वन इज द फिल, तो इसका कलर चेंज करता है. ठीक है, so if you click on this box it will change the color. Okay, then there is stroke. Stroke is nothing but a border, वो हम आगे देखते हैं. ठीक है,
So these are the most important tools: shapes, पेन टूल एंड टेक्स्ट. पेन टूल भी ठीक है, आपको इतना काम नहीं आएगा, बट टेक्स्ट. ओके, सो लेट्स सी. I have clicked on rectangle, and the first, I am dragging it randomly. So ये rectangle draw हो रहा है. Now ये by default इसका color है gray. If I add a stroke, it will add a border to it, black. तो मान लो मुझे इसका साइज बढ़ाना है 5 pixel. So the border increases. Okay, I need to change the border to red. तो मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, I need to make this black. That is how I do. ठीक है, अब मान लो मुझे स्क्वायर बनाना है. सो व्हाट डू आई डू? यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं. इट्स अ सिंपल थिंग. यू प्रेस शिफ्ट ऑन योर कीबोर्ड. आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाएंगे एंड देन फिर आप उसको ड्रैग करेंगे. तो ये एक प्रोपोर्शन में बनेगा. इफ यू सी, मैं कैसे भी रैंडमली घुमाऊंगा तो भी वो प्रोपोर्शन में बन रहा है. यू सी द साइज 400 बाय 400, 412 बाय 412, बिकॉज मैं शिफ्ट दबा के उसको ड्रैग कर रहा हूँ. मैं जैसे ही शिफ्ट हटाऊंगा ये अगेन रैंडम हो जाएगा, फ्री. और मैं जैसे ही वापस शिफ्ट दबाऊंगा तो वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा. ओके, सो दैट इज हाउ यू डिजाइन अ स्क्वायर. ठीक है, सो इसका हम कोई अलग शेप, अलग कलर दे देते हैं. दिस राइट नाउ. Okay. So let's see what are the different other shapes that we can try. So say we now need a circle. So हम ellipse लेंगे and we have a circle. Circle में भी same है. If you press shift and then drag, वो proportion में बनेगा proper, वरना वो random ऐसे oval वगैरह बनेगा. ठीक है, अगर आपको इसको ड्रैग करना है, अगेन शिफ्ट दबा के अगर ड्रैग करोगे तो प्रोपोर्शन में होगा. अगर बिना शिफ्ट के ड्रैग करोगे तो वो ओवल बनेगा. दिस अप्लाइज टू रेक्टेंगल, स्क्वायर ऑल्सो. ठीक है, इज एवरीवन विथ मी? आई होप यू गाइस आर ट्राइंग. निकेत, ऋषि, हनी, जूही, लक्ष्मी. Yeah, yeah. Yeah, Yes, yes. ओके, परफेक्ट. सो एक और यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स है. सो लेट्स सी वन विच इज द ड्रॉप शैडो. है ना, तो अब ड्रॉप शैडो क्या करता है? ये बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, इसका ब्लर. तो ये ब्लर उसका ज्यादा कर दिया. स्प्रेड देखेंगे तो वो और ज्यादा वाइड होता जाएगा. ठीक है, एंड अगर ये ओपेसिटी कम करेंगे तो वो लाइट डार्क होगा शैडो. अगर मैं 100 रखता हूँ तो पूरा ब्लैक होता है. वी नेवर वांट सच हार्ड शैडोज. so this is how you create a shadow. ये x एक्सिस ऑफ कोर्स, x एक्सिस y एक्सिस पता है. so if you see, मैं अगर x बढ़ा रहा हूँ तो इट इज मूविंग राइट लेफ्ट, है ना. लेकिन if I am moving y axis, so it will move on top and bottom. So this is how you create shadows. So जैसे भी बीच में long shadows का ट्रेंड था, so this is how you create long shadow. y axis और x axis ऐसे बढ़ा दोगे. So this is how you create a long shadow, है ना. आप इसका ऑफ कोर्स कलर भी चेंज कर सकते हो. ये भी एक टाइम पे ट्रेंड था. तो मान लो यही मेरा सर्कल का मैं कलर भी दे देता हूँ, है ना. तो ऐसा लग रहा है उसी का वो शैडो है. करेक्ट. सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ डिजाइनिंग. इसी को अगर हम शैडो ले रहे हैं तो फिर स्ट्रोक की कोई जरूरत नहीं है. देन कम्स अ लाइन. ऑफ कोर्स लाइन में भी सेम है. अगर मैं ऐसे रैंडम घुमाऊंगा तो कोई भी एंगल पे जाएगी वो. ठीक है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, रैंडम नहीं जाएगी. अगर यहाँ पर भी आ रही है वो तो भी वो स्ट्रेट जा रही है. सी, अगर मैं इसको नीचे भी ला रहा हूँ तो भी वो स्ट्रेट जाएगी. ठीक है, एंड इफ यू सी उसका जो एंगल है वो 45 डिग्रीज पे मूव होगा, एकदम प्रॉपर एंगल पर. वैसे अगर मैं शिफ्ट हटा दूंगा तो वो कैसे भी एंगल पे मूव होगा. और अगर ये देखोगे तो लाइन भी सीधी नहीं होगी, टेढ़ी लाइन.
राइट. इफ यू सी दिस इज अ ब्रोकन लाइन, सो अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो वो स्ट्रेट हो जाए. ठीक है. लाइन में भी आप सेम चीजें अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन इंक्रीज द साइजेस. तो मान लो अभी ये अगर ये थ्री डॉट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, so there are different ways of line. So अगर मैं इसको, अच्छा by the way, how to replicate this, एक ऑप्शन है कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको आप ड्रैग कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा ऑप्शन है सिंपली आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाओगे तो आप ये देखोगे द माउस चेंजेस. जैसे ही ऑल्ट दबा रहे हो द माउस चेंजेस, और इसके ऊपर आपका माउस लेके जाओगे और ड्रैग करोगे तो उसका डुप्लीकेट बन जाएगा. ठीक है. सो ये आप इसमें माउस लेके जाते हो, ऑल्ट दबाते हो एंड यू ड्रैग इट, सो यू गेट डुप्लीकेट. ठीक है. सो अभी इसका हम थोड़ा चेंज करते हैं. लेट्स सी डैश्ड. सो यू गेट डैश्ड. तो आपको कितने क्वांटिटी ऑफ डैश चाहिए? सो लेट्स सी 15. तो उतना वो दूर होता जाएगा, कम ज्यादा डैशेज आएंगे. सो इफ आई डू 2, राइट, सो दो दो पिक्सल के गैप में डैश है. तो डैश दीज आर नथिंग बट द पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, 10 पिक्सल जैसे. तो अब यहाँ पर अगर हम देखें डैश का गैप, तो स्क्वायर चाहिए कि राउंड चाहिए? इफ आई डू राउंड, सो इफ यू लुक क्लोजली, सो एवरी डैश इज राउंडेड. यहाँ पर स्क्वायर है, राइट, ये बाय डिफॉल्ट नन. ठीक है. सो डैश का जो गैप है वो स्क्वायर हो गया. देखो इक्वल, ये करोगे तो जो हमने ऊपर स्पेस दिया उतना आ जाएगा बाय डिफॉल्ट. ठीक है. सो देर इज मोर टू दिस लाइन. सो अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, यू कैन ऐड एरोज, start point and this is the end point. So that's why there are two. This is the start point and this is the end point. So मान लो start पे I need an arrow और पीछे I need a reverse triangle या circle या फिर diamond. So I can do that. ठीक है. So these are different attributes of line. So अगर आप closely देखोगे तो ये line अभी sharp है. So I can also make it rounded. So start of the line is rounded, correct, एंड एंड वन इज नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया. तो आई मेक द अदर वन आल्सो राउंड. सो नाउ इफ यू सी द लाइंस आर राउंडेड. ठीक है. सेम थिंग यू कैन आल्सो डू योर आल्सो विथ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. सो से यू वांट एजेस जैसे राउंड हो. ठीक है. सो आप उसमें क्या करोगे, क्लिक करके दिस इज द बॉर्डर रेडियस, ओके, कॉर्नर रेडियस. तो इसको हम अगर हम बढ़ाएं, मान लो 10 पिक्सल, तो यू सी यहाँ पर इफ यू नोटिस तो यहाँ पे वो चेंज होता जाता है, रेडियस, करेक्ट, सबके साथ में, राइट. तो अगर हमको सिर्फ यहाँ का ही कॉर्नर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे और यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर ये इन्होंने बताया लेफ्ट राइट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट. तो लेफ्ट का ही मुझे अगर सिर्फ करना है तो मैं सिर्फ लेफ्ट का कर सकता हूँ. तो आई सी तो सिर्फ टॉप लेफ्ट का हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है. अगेन क्लिक ऑन दिस एंड आई सी नेक्स्ट. उस पर क्लिक करूंगा वापस, आई सी, है ना, ये व्हाट इज द रेडियस. तो मान लो हम सेम ही रखते हैं तो वापस इसको हम यहीं जाके 30 कर सकते हैं, तो सबका सेम हो जाएगा. सो आई कैन ऑल्सो मेक दिस स्क्वायर इनटू अ सर्कल बाय एडिंग अ कॉर्नर रेडियस. सो मैं इसको इतना रेडियस कर दूंगा अंटिल इट बिकम्स अ सर्कल. सो इसका लिमिट क्या आया था, अब इसकी विड्थ और हाइट थी 412. ठीक है. सो उसके देखे जाए तो उसका हाफ जो होगा तब से वो शुरू होगा सर्कल बनना. तो देखो 400 तो 200 से वो शुरू हो जाता है टू लुक लाइक अ सर्कल, बट एग्जैक्ट सर्कल नहीं है ये देखो. तो इसलिए विल गो थोड़ा बियॉन्ड हाफ. सो 412 का हाफ जब मान लो 400 ही है अगर, तो उसका हाफ इज 200. सो इसको अगर आप देखो यहाँ पर आप लिंक और ये कर सकते हैं. सो इफ दिस इज लिंक राइट, अगर ये कंस्टेंट ऑप्शन जो है वो अगर लिंक किया हुआ है तो आप अगर एक चेंज करोगे तो हाइट वेट दोनों साथ में चेंज होगा. लेकिन अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो अगर विड्थ बढ़ा रहे हो तो सिर्फ विड्थ ही बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी. ठीक है. सो स्क्वायर है, सो विल मेक इट इवन, तो इसको 400 कर देते हैं. ठीक है. सो नाउ द रेडियस अगर जैसे मैं 200 करूंगा इट विल स्टिल लुक लाइक अ सर्कल. ठीक है. सो आई एम चेंजिंग a rectangle to a circle using corner radius. Cool. So ये हमारे majority shapes है that you will use.
ठीक है। अब आपको अगर आर्टबोर्ड ही पूरा रेप्लिकेट करना है, सो देयर इज अ शॉर्टकट, कंट्रोल डी, सो यू गेट द एंटायर आर्टबोर्ड रेप्लिकेटेड। ठीक है, आपको पूरा आपका आर्टबोर्ड रेप्लिकेटेड मिलता है। So now let's see the second part of it, which is the text. किसी को कोई डाउट अब तक? I hope everyone is following. No. Yes. नहीं, Okay, okay. So let's see the text part. So हम एक पहले लिखते हैं हेडलाइन। ऑफ कोर्स हेडलाइन इतनी छोटी तो नहीं होगी, तो यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज भर लेंगे 96। दिस इज वेयर वी चेंज द फॉन्ट्स। सो मान लो हम लिखते हैं पॉपिंस, ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं फॉन्ट वेट। तो ये है फॉन्ट फैमिली, उस फॉन्ट फैमिली का फॉन्ट वेट, थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, एंड ये सारे इटैलिक वाले हैं। तो हम इसको भी करते हैं बोल्ड ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉन्ट साइज। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू चेंज। अब इसको भी अगर वापस कॉपी करना है तो सेम थिंग, ऑल्ट एंड ड्रैग। अब इसको ही मैं रेगुलर बॉडी कॉपी रखता हूँ। ओके, so this is a paragraph। ठीक है, इसका हम फॉन्ट साइज ऑफ कोर्स छोटा रखेंगे, मान लो 24, बोल्ड नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे। ओके, ये हेडलाइन। अब एक हम रखते हैं टाइटल, जो हेडलाइन से छोटा हो सकता है, तो हम उसको 64 रखेंगे। ठीक है, अब ये जो है फर्स्ट वाला पार्ट, ये है दो हेडलाइन के बीच की स्पेस। ओके, so let me grab some content and we'll see what is the line height. So I am taking some random text from a blog। ठीक है, so अगर अब ये देखो यहाँ पर there are different types of width to this particular text element। एक है ऑटो विड्थ, मैं जितना कंटेंट डालूंगा वो एक ही लाइन में जाएगा। ठीक है, बट सेकंड वाला जो है वो ऑटो हाइट है। उसमें क्या होता है कि अगर मैं विड्थ इतनी रखी है मैंने, लेकिन मैं उसको ऑटो हाइट कर देता हूँ, तो इसी विड्थ पे सब नीचे नीचे जाएगा। ठीक है, थर्ड है विच इज नथिंग बट अ टेक्स्ट एरिया, जिसमें मैं जो साइज का हाइट और विड्थ रखूंगा उतने में ही रहेगा वो। ये देखो ऐसा। ठीक है, so what we need here is always, which I prefer is auto height and not अगर ऐसा छोटा टेक्स्ट है तो आई यूज ऑटो विड्थ। अगर ऐसा पैराग्राफ जैसा कुछ है तो आई यूज ऑटो हाइट। इससे क्या होता है कि मैं एक विड्थ सेट कर रहा हूँ लेकिन हाइट मेरी वेरिएबल है। ठीक है, देन आई कैन चेंज माई विड्थ अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वरना ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस दिख रही है, दिस विल टेक अप द स्पेस और फिर अलाइनमेंट में इश्यूज आएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट यू वांट टू ऐड, हम इसको चेंज करेंगे। सो विल कीप ऑटो हाइट फॉर नाउ। ठीक है, अभी ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, बिकॉज वी वांट टू डिस्कस अबाउट द लाइन हाइट। सो जैसे ये जो है, ये दो लाइन के बीच की स्पेस, वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट राइट नाउ इट इज 36। ठीक है, तो मैं इसको अभी बढ़ाता जाऊंगा तो ये देखोगे आप, इसकी स्पेस बढ़ती जाती है दो लाइन के बीच में। करेक्ट, वैसे ही ये दो लेटर के स्पेस की स्पेस है, बीच की स्पेस है। तो अब अगर इसको हम देखते हैं क्लोजली, मैं इसको अगर ये बढ़ाता हूँ, ठीक है, सो यू सी बिकॉज के बीच की स्पेस बढ़ रही है। राइट, लेटर स्पेसिंग, तो ये परसेंटेज में, तो अगर मैं देखो बढ़ा रहा हूँ, सो बिकॉज हमारा नीचे चला गया क्योंकि उसके बीच की स्पेस कम हो गई। अगर मैं वापस जीरो करता हूँ तो यू विल सी कि इट गोज बैक टू नॉर्मल। ठीक है, सो दिस इज द लेटर स्पेसिंग। एंड ये जो है हमारा, ठीक है, दैट इज द पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अगर मेरा, मान लो मैं यही, इसमें ही मैं दो पैराग्राफ रखता हूँ। ठीक है, तो पैराग्राफ कहाँ डिफाइन होता है, जब मैं एंटर में आता हूँ।
जब मैं एंटर करके नया टेक्स्ट डाल रहा हूँ तब। तो अगर मैं पैराग्राफ करता हूँ तो ये देखो, ये दो पैराग्राफ के बीच की स्पेस वो चेंज हो रही है। सो ये जो स्पेस है ये मैंने एंटर करके अलग नहीं की है, इट इज द टेक्स्ट एरिया। लेकिन इसके बाद ये जो टेक्स्ट है वो मैंने एंटर करके किया है, तो ये हमारा पैराग्राफ स्पेस है। ठीक है, ये ऑफकोर्स ये अलाइनमेंट, अभी लेफ्ट लाइन है, ये मैं सेंटर करूंगा तो सब सेंटर है, राइट करूंगा तो राइट। ठीक है, ये जो है हमारा दिस इज द अलाइन। अभी ये पैराग्राफ के सेंटर में हो गया, ये जो टेक्स्ट एरिया है उसके सेंटर में, ये टॉप में और ये बॉटम में। ये अभी इसमें नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर समझ में आएगा। देखो अगर ये है दिस इज सेंटर, तो ये टेक्स्ट एरिया के सेंटर में आ गया। बॉटम करूंगा तो इस टेक्स्ट एरिया के बॉटम में आ गया, ऊपर का स्पेस खाली हो गया इसमें। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, सो यू कैन ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस, ट्राई कर सकते हो क्या करना है ना। एक ये वर्टिकल ट्रिम मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज ये अलाइनमेंट वगैरह में हेल्प करता है। सो नाउ व्हाट इज वर्टिकल ट्रिम, अगर आप ये देखोगे टेक्स्ट तो इतना ही है ना। मैं रूलर ले लेता हूँ, करेक्ट। सो टेक्स्ट तो हमारा इतना ही है, लेकिन उसके आजू बाजू का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, करेक्ट। सो ये क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ द लाइन हाइट वन। लेकिन आप कितनी भी लाइन हाइट कम करो तो भी वो एरिया कम नहीं होगा, इसलिए फिग्मा हैज दिस वर्टिकल ट्रिम। इसमें क्या होगा कि जितना आपका टेक्स्ट है ये एरिया जो है बॉक्स वो उतना ही दिखाएगा, सी उतना ही होगा, है ना। सो ये जो बॉक्स है वो कम हो गया, सो दिस हेल्प्स यू इन अलाइनमेंट। सो जब आप ये टेक्स्ट वगैरह बटन में डालोगे या सब डालोगे, और जब आप ऑटो लेआउट वगैरह ग्रुप वगैरह हम आगे करेंगे तो तब ये सब काम आएगा। ठीक है, सो अब मान लो कि ये सब मुझे एक ही चीज में चाहिए एंड आई वांट टू रिपीट दिस। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाय द वे दीज आर द लेयर्स। हाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। ये आर्टबोर्ड वन है हमारा जो, ये उसके लेयर है। तो इसमें मैं जाऊंगा तो देखो ये सिलेक्ट हो जाता है, रेक्टेंगल सिलेक्ट है, रेक्टेंगल सिलेक्ट है। तो मान लो कि आई वांट टू क्लब ऑल दिस थ्री, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा तीनों को। तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, वन इज राइट क्लिक एंड ग्रुप। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन एंड द सेकंड ऑप्शन इज कंट्रोल जी। तो ये अब ग्रुप हो गया। सो इफ आई मूव दिस तो ये साथ में ही मूव होगा। ठीक है, ये साथ में मूव होगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ग्रुप आ गया, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, टेक्स्ट ग्रुप मान लो। ठीक है, ऐसा। सो अगर आप ट्यूटोरियल्स देखोगे सो और भी बहुत सारी डिटेल्स है, जैसे ये ग्रुप है हमारा, वैसे ही यहाँ से आप कंपोनेंट भी बना सकते हो। सो नाउ व्हाट इज अ कंपोनेंट, ये मान लो ये हेडलाइन है। ठीक है, सो इसके मैं मल्टीपल ये बना देता हूँ, इसका एक ऑप्शन नहीं देता हूँ। ठीक है, सो मैंने इसके मल्टीपल ये बना दिया, रेप्लिकास। ठीक है, हेडलाइन पे। अब ये जब हेडलाइन मैंने कॉपी किया, अब मुझे चाहिए, अरे यार हेडलाइन का मुझे कलर ना रेड चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, और मुझे इतना बोल्ड नहीं चाहिए, थोड़ा कम बोल्ड चाहिए, सेमी बोल्ड चाहिए। सो क्या करना होगा, क्या होगा, मैंने पूरे वेबसाइट में पूरे ऐप में जहां जहां भी ये यूज किया है मुझे इंडिविजुअल जाके उसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। सो टू अवॉइड दैट व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट दिस एज अ कंपोनेंट। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये सबको हटा देंगे यहाँ पर। लैंग्वेज, हाँ। अब हम इसका कंपोनेंट बनाएंगे, क्रिएट कंपोनेंट। अभी ना क्या हुआ, ये एक इसका पेरेंट कंपोनेंट बन गया, इसको हम बाहर ले लेते हैं, किसी इसके नाम, इसका अलग से नाम भी आ गया। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम रेप्लिकेट करेंगे सेम वे में, ऑल्ट दबा के। ठीक है, सो अब मैं इसका लेकिन टेक्स्ट वेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, कंटेंट चेंज कर सकते हो। जब आप कंपोनेंट बनाते हो तो इट इज मोर टू डू विद द प्रॉपर्टीज, द सेटिंग्स ऑफ इट। ठीक है, हेडलाइन टू, हेडलाइन थ्री, हेडलाइन फोर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर फॉर द हेडलाइन टू ब्लैक। तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे रेड, तो आप इसको रेड करोगे। सो इफ यू सी, जितने भी हमारे कंपोनेंट के इंस्टेंसेस थे, कॉपी थे, वो सब
अब रेड हो गए। मैं इसको जाके अगर यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसको डबल क्लिक करके बोल्ड के जगह मैं मीडियम करता हूँ, तो हमारे सब जगह जितने भी थे मीडियम हो गए। सो दिस इज हाउ यू यूज कंपोनेंट्स। एक और बार बताना कंपोनेंट कैसे बनाया आप? हाँ, सो बाय हमने क्या किया, मैं वापस शुरू से करवाता हूँ, ठीक है। आप मुझे इतना बता दो कि आपने क्या सेटिंग अप्लाई करी थी उसको, क्या सॉरी। है उसको कंपोनेंट कैसे बनाया, बस उतना से ही जानना है, हाँ, बाकी समझ गया मैं। अभी ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। हाँ यहाँ पर ये ऊपर जो आइकन दिख रहा है क्रिएट कंपोनेंट, हाँ, ओके ओके। मैंने उसको क्रिएट किया कंपोनेंट में, ठीक है। हाँ और फिर इसको मैंने नॉर्मल रेप्लिकेट किया यूजिंग ऑल्ट, मैंने उसको कॉपी किया, बस कॉपी ओके। करके मैं उसके इंस्टेंसेस बनाता गया। हाँ हाँ हाँ, और फिर जब मैं कंपोनेंट में जाके कुछ चेंज कर रहा हूँ, सो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल माय डिफरेंट इंस्टेंसेस, जो पेरेंट में करना है। लेकिन आप कहीं पर भी करोगे तो नहीं होगा, यू हैव टू डू इट इन द पेरेंट कंपोनेंट। सो इसलिए हमने पेरेंट कंपोनेंट को बाहर रखा है। हाँ मेरा ना एक इश्यू हो रहा है, जैसे मैंने ना ये कंपोनेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे इसमें, पता नहीं क्यों। आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, वैसे क्रिएट कंपोनेंट राइट क्लिक करके भी आएगा। ये ना मेरा ऑलरेडी शायद एक वेरिएंट वेरिएंट करके कुछ बना हुआ है, उसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है ये, हाँ, और उसको मैं अगर वो बाहर। वेरिएंट करके बनाया हुआ है दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी अ कंपोनेंट। हाँ वेरिएंट अपने आप में कंपोनेंट है। हाँ, मतलब ये कंपोनेंट होता है ना, उसमें आप हम्म अलग वेरिएंट्स बनाते हो, ठीक है। और वेरिएंट क्यों बनाते हो, तो जब आप बटन बना रहे हो मान लो, ठीक है। हम्म सो एक बटन है, उसका एक नॉर्मल स्टेट है, ठीक हम्म। है। जैसे मैं यहाँ पर आपको क्रिएट करके बताता हूँ। तो हमने क्या किया, एक बटन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। हाँ ये है अभी ब्लैक, ओके। इसको हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं और इसके ऊपर एक हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। हम्म। ठीक है, ठीक है। मैंने इसको एक बटन बना दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। ये मेरा कंपोनेंट बन गया, एक हम्म। बटन, ठीक है। हम्म अब इसमें मैं वेरिएंट बनाऊंगा। नाउ व्हाट इज वेरिएंट्स, ये मेरा डिफॉल्ट स्टेट है। नाउ आई एम हम्म क्रिएटिंग अ वेरिएंट इसी के हम्म अंदर, कि अगर मान लो कि इसको किसी ने क्लिक किया या इसके ऊपर कोई माउस ओवर लेके गया, तो इसका कलर हो हम्म, जाना चाहिए रेड, ओके। ठीक है। और हम्म मान लो कि अब मैं वापस इसको जाता हूँ, एक और वेरिएंट बनाता हूँ कि अगर हम्म कोई फॉर्म में कोई इश्यू है तो बटन हो जाना चाहिए ग्रे, तो मैंने इसको ग्रे कर हम्म दिया, ठीक है। अब आप इसको यूज कैसे करोगे, आप जब इसको यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको टॉप पे, ठीक है, कंपोनेंट की शीट आ जाएगी, ये रही, ओके। ठीक है। तो आप यहाँ पर हम्म ड्रैग करो कंपोनेंट, तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट था आपका वही दिखेगा, ओके। हम्म लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, ये स्क्रीन पे मुझे चाहिए ग्रेड आउट, तो आप हम्म यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो उसका वेरिएंट, हम्म, ये रहा वेरिएंट 3, तो वो यहाँ पर चेंज होता है। तो आपको ओके अलग ओके। अलग बटन बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही बटन से आप अलग अलग वेरिएंट बना सकते हो, ठीक है। ओके। इसको ये हाँ आगे आप प्रोजेक्ट पर भी कर सकते हो। हाँ एक्चुअली मेरे शायद इसने ना मैं मेरा जो डेस्कटॉप पेज था वो अपने वो वही वेरिएंट बन गया है, अगर इसी वजह से नहीं हो रहा था, उसके अंडर में नहीं हो हाँ, रहा था। इसको आपने कंपोनेंट बना दिया गलती से। हाँ डेस्कटॉप कोई, तो पर कोई बात उसमें नहीं, उसको राइट क्लिक उसको करके, कैसे करूँ? उसको राइट क्लिक करके आप अनलॉक कर सकते हो। जैसे हाँ, यहाँ गए और जैसे इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट जी करोगे तो वो कंपोनेंट से हट जाएगा। रुको। मैक में कमांड शिफ्ट जी होगा ना? कमांड शिफ्ट जी, यस। नहीं हट रहा है। कोई बात नहीं, तो डिलीट करके वापस बना लो।
ओके। ठीक हाँ है। ठीक है। किसी और हम्म। को कोई इश्यू आ रहा है या कोई डाउट्स? नो। ओके परफेक्ट। तो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज ये जितने भी हम फिग्मा का जितने भी ट्यूटोरियल्स है, ये कंपोनेंट्स हो गए, राइट, टेक्स्ट हो गया, उसके अलग प्रॉपर्टीज हो गई, गो थ्रू दैट। अगर आपके ट्यूटोरियल्स हो गए हैं, आई सेंड सम मोर ट्यूटोरियल्स, ठीक है, उसको और फाइन ट्यून करो। एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम यूजर रिसर्च का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ठीक है, सो उसमें ऐसा ना हो दैट वी आर स्टक ऑन फिग्मा। तो डोंट गेट स्टक ऑन फिग्मा। फिग्मा ये आप नेक्स्ट लेक्चर विच इज ऑन वेडनेसडे, करेक्ट, उसके पहले आप पूरा फाइन ट्यून कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रो हो जाओगे, बट एटलीस्ट ट्राई दैट यू कैन इजीली कंप्लीट इट, यू कैन इजीली परफॉर्म द टास्क। क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर से जो हम रिसर्च के जो प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, यू विल नीड टू पुट इट ऑन फिग्मा ओनली, so it would be very very helpful for all of you. Okay, so uh, this was it for today's lecture. We have completed the entire part for our Figma also. Okay, so what we will do in the next lecture is, I'll again reiterate, we will work on the user research, the general research. We'll take up a project, okay, and we'll do research for that particular project. We'll see how we will design the presentations for that, and we will start working on user personas, or we'll start defining the user personas. Okay, so if any doubts, feel free to ask in the lecture, apart from lecture also on WhatsApp. Feel free to share whatever you guys have practiced in Figma. Share me the links, okay, and I will of course get back to you guys with the feedback, or of course if there is anything that I have to point out. And yeah, that's it for today's lecture. Anyone, any doubts? Else we can wind it up. नो डाउट। Okay, perfect, perfect. No So doubts. okay, okay. So our next lecture will be of 2 hours. It will be an extensive lecture because we will be doing a lot of things on Figma. We will spend some good time on Figma. And yeah, so be prepared, get your laptops charged, and be all ready with your Figma tutorials. Thank you guys. Have a nice weekend. Have a nice day ahead. Thank you so much. थैंक यू। Thank Thank you. you. Bye. Thank you. Thank Thank you. you. So Correct. Thank you. Thank you, sister.